Assalamualaikum students. So today's video is about the macroeconomics topic GDP. We will discuss in detail about certain words that are being given in the GDP definition. So let's get started with the definition. GDP. G stands for gross, D stands for domestic, and P stands for the product. Definition is the market value of all the final goods and the services produced within the geographical boundary of the economy in a specific time period. Now, what is the market value? What is meant by the final goods and the services? And what comes in the geographical boundary of the economy? And how is time being specified? And now we will be doing it one by one. So the first one is the market value. So in general, the market value means the value or the price of the product in a market. And it is calculated as price multiplied with the quantity. Now, why we use the market value? We could just find the GDP by finding the aggregate of the different products in the market. Like shown in this example, the 10 kg of wheat is being added to the 10 meter of cloth. So we'll be getting the answer 20. Now what about the unit used? With the wheat we use kg, but with the cloth we use meter. So in order to solve this unit problem, we use the market value of the different products, where we just have to multiply the price of that product with the quantity being produced in the specific time period. For example, हम वही wheat और cloth लेते हैं, and let's assume that wheat की जो हमारे साथ price है that is 500 और जो quantity produced हुई है within the specific time period that is 100. तो मतलब कि market value हमारे साथ क्या हुई 50,000. और इसी तरह अगर हम क्लोथ के लिए ले लें तो क्लोथ की अगर हम प्राइस ले लेते हैं 100 और क्वांटिटी भी हम 100 ही ले लेते तो मार्केट वैल्यू क्या बनी 10,000. मतलब कि जो जीडीपी हम कैलकुलेट करेंगे वो इन्हीं मार्केट वैल्यूज से करेंगे. नो यूनिट इज़ रिक्वायर्ड. सो वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट वैल्यू. और अब हम फाइनल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्कस. फाइनल और द फिनिश गुड्स मीन्स the products that are ready for the consumption. मतलब कि जब भी हम GDP को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें उन गुड्स को हम शामिल नहीं करेंगे that are not ready for the consumption. उसकी एग्जांपल क्या है इंटरमीडिएट गुड्स हो गए. अब इसको समझने के लिए हम आयरन या स्टील की एग्जांपल लेते हैं. आयरन या स्टील. ना ये जो हमारे साथ आयरन स्टील है दिस इज़ एन इंटरमीडिएट गुड. इंटरमीडिएट गुड. इट इज़ नॉट रेडी फॉर यूज़. ये जब हमारे साथ प्रोसेस होगा और इससे फॉर एग्जांपल बन गया बाईसाइकिल. नाउ दिस बाईसाइकिल इज द एग्जांपल ऑफ द फाइनल और द फिनिश्ड गुड बिकॉज इट इज़ रेडी टू यूज़. नाउ इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द जीडीपी तो उसमें हम आयरन या स्टील को इंक्लूड नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ बाईसाइकिल को इंक्लूड कर लेंगे. ये आगे जाके हम जीडीपी के मेजरिंग मेथड्स जो है उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे. उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाई इज़ नेसेसरी टू ओनली टेक द फाइनल और द फिनिश गुड्स एंड द सर्विसेज एंड वाई शुड वी नॉट इंक्लूड द इंटरमीडिएट गुड्स. नाउ वी विल एक्सप्लेन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिफिनेशन दैट वाज विदिन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. यानी कि पाकिस्तान के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही है दैट विल बी कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द जीडीपी. इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. क्वेश्चन है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है और वो पाकिस्तान के अंदर यहाँ सब पाकिस्तान हो गया. ये पाकिस्तान के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है. तो क्या ये कंपनी जो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है विल दैट बी द पार्ट ऑफ द जीडीपी और नॉट? टेक योर मिनट एंड थिंक अबाउट इट. वेल द आंसर इज यस, इट विल बी कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द जीडीपी. एंड द रीज़न इज़ कि हमने जब डिफिनेशन पढ़ा था तो उसमें जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हमने कहा था. हमने ये नहीं कहा था कि जो प्रोडक्शन हो दैट शुड बी डन बाय द रिसोर्सेज ऑफ दैट कंट्री. मतलब कि कोई और रिसोर्स आके उस कंट्री में प्रोडक्शन कर सकती है उसी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर. अगर वो प्रोडक्शन करेगी सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द जीडीपी. सो मतलब कि एज लॉन्ग एज द प्रोडक्शन इज़ बीइंग डन विद इन द बाउंड्री इट विल बी कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द जीडीपी.
And in the same manner, a person from the other country doing production and generating income within the geographical boundaries of Pakistan, that will be considered and that will be the part of the GDP. अब हम एक तीसरा सिनेरियो लेते हैं. There's this पाकिस्तानी गाय जो कि चाइना में काम कर रहा है और यहाँ पे इनकम वो जनरेट कर रहा है. तो क्या ये जो यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहा है, will that be the part of Pakistan GDP? So the answer is no, it will not be considered the part of Pakistan GDP क्योंकि इसके geographical boundary में वो नहीं आ रहा. ठीक हो गया? I hope we are clear with this geographical boundary concept. अब हम लास्ट वन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं एंड दैट इज़ द स्पेसिफिक टाइम पीरियड. यानी कि हम जीडीपी कितने टाइम में कैलकुलेट करते हैं. ये क्वार्टरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि 0 to 3 मंथ्स जीडीपी कैलकुलेट हुआ है वो ये है और इसके बाद ये तो एक क्वार्टर हो गया. इसके बाद जब 3 मंथ्स और होंगे तो इसमें जो जीडीपी कैलकुलेट हो गया, फॉर एग्जांपल ये जीडीपी 2 ये हो गया, ये वाला हो गया. ठीक हो गया. सो लाइक टाइम टू टाइम हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं. बट देयर इज़ वन थिंग दैट जीडीपी 1 में जो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसका जीडीपी 2 के साथ कोई कंसर्न नहीं होगा, मतलब कि वो इस जीडीपी 2 में इंक्लूड नहीं होंगे. सो वी हैव डिस्कस्ड द जीडीपी definitions very thoroughly, but if you have any kind of questions or queries you can ask me in the comment section.